Maya Bank has aptly said, and I quote, "True friendship has no boundaries, no parameters, and certainly no conditions." Similarly, our friends have no boundaries when it comes to show a humane gesture. Today, I'm obliged to welcome one of our friends from America, Mr. Gary Marangoni, in a small cultural exchange session. Welcome everyone to our next episode of Friend Around the Globe. And today we have Mr. Gary Marangoni, and he's joining us from America, straight from America, and we all love America. बच्चों मैं बता रहा था कि गैरी हमको सीधा अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं और आज वो हमको बहुत सारी हम उनसे बात करने वाले हैं एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मिस अमृता बिकॉज मिस्टर गैरी इज अ फ्रेंड ऑफ हर and we are really thankful to her that because of her we are able to meet Gary, and we are going to share a lot of cultural things, and we are going to talk a lot of things about him, about America, and about India. We'll enjoy it. So over to you, Amruta. बच्चों मैं बता रहा था कि हम लोग अमृता मैम की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। वो अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे गैरी के बारे में। Okay, so I'll introduce you, Gary. So बच्चों मैं अभी आपको गैरी जी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी ताकि आप उनको बेहतर जान सके। तो गैरी और मैं एक्चुअली एक ऑफिस में काम करते हैं और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई एंड नाउ वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स। सो अभी हम अच्छे दोस्त हैं। ओके, तो गैरी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि एक रेड क्रॉस करके एक एनजीओ है जहाँ पे गैरी गैरी ने 15 साल की उम्र में अपनी सेवा करना स्टार्ट किया था, शुरू किया था और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 25 साल तक अपनी सेवा दी। यानी कि गैरी को सोशल या फिर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान काफी उन्होंने दिया हुआ है। वहीं पे उनसे उनकी मुलाकात कुछ अच्छे दोस्तों से हुई जो उनके अब तक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त वहाँ पे बनी जो अभी उनकी पत्नी है। गैरी को बचपन से गणित और कंप्यूटर्स में बहुत रुचि है और उन्होंने उसी को अपना पैशन बनाया और उन्होंने उसमें बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है। गैरी कंप्यूटर्स में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अभी 30 साल से ऊपर हो गया उनको काम करते हुए। उन्होंने बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों में अपना योगदान दिया हुआ है। उन्होंने बड़ी सारी कंपनीज में काम किया हुआ है। तो उनकी एक चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगी। वो क्या करते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें वो बहुत रुचि लेकर वो काम करते हैं और वो हमेशा रोज़ उस काम से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसलिए उनकी वो रुचि बनी रहती है और वो कुछ नया भी सीख जाते हैं। उनका यह मानना है कि हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए और लेकिन हम जो भी सीखते हैं हमें उसे मज़े से सीखना चाहिए। क्योंकि सीखना ही है जो हमें लाइफ में आगे जाकर हेल्प करेगा। ठीक है? और उनका एक फेवरेट कोट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनका ऐसा मानना है कि जो लोग खुश रहते हैं वो दूसरों को खुशी दे सकते हैं। अभी अगर अपने पास कोई चीज़ है तभी हम किसी और को दे सकते हैं, बराबर? तो उनका ये मानना है कि हम खुश रहें ताकि हम दूसरों को भी खुशी दे सकें और जब हम खुश होते हैं तब अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो ये था उनके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। बाकी लाइक ओवर टू यू अमित सर। Okay. Am Amit, I live? Am I on? you're mute on, Amit sir. Okay, so yeah, she was telling a lot of amazing thing about you. So बच्चों गैरी को एक हाई कर दो ताकि हम स्टार्ट करें अपनी मीटिंग। Hello. म्यूट से हटा के। Hi, sir. Hi, Gary. Hi, sir. Sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, Hi, Gary. sir. Sir. You're on mute, Gary. Okay. Okay. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Excellent. Okay. Okay. 30 years of computer experience and I still get the mute button stuck. Okay. So, hi, I am Gary Marangoni. I'm from Pittsburg, Pennsylvania, which is in the eastern half of Pennsylvania. Sadly, this is backwards. There's downtown Pittsburgh. Of course, not right now because it's snowy and very, very cold here. But Pittsburgh is the start of the Ohio River
which is a large river in the United States, which feeds into the very largest, which is the Mississippi. So two rivers come together at the point, which you can see here, at the head of the Ohio. Let's see here. Hopefully, can you see my screen, or do you just see me? Yes, yes, Gary, we can see your screen. Excellent. Okay. So Pittsburgh was not always clear air and pretty. This is a picture of Pittsburgh at noon during the day in the 1940s, where the air pollution was so great that the streetlights ran during the day. And that was from, on the right-hand side there, the steel mills. And the steel mills belched out smoke all day and all night. And actually, how smoky Pittsburgh was one of the reasons that the United States started the Environmental Protection Agency to help clean up the air. 40 years later, in the 1980s, the steel mills closed, and that was a really big impact on the whole area of southwestern Pennsylvania, not just Pittsburgh, because there was a lot of manufacturing and businesses that were related to the steel mills, either before making the raw materials that the steel mills used, or working on the steel that the steel mills produced. And when those closed down in the 80s, it was a massive hit to jobs in the area. At one point, over 20% of the people didn't have jobs in the 1980s. It was a very big change for the area, and Right. Pittsburgh had to pivot and change to, let me back up one here. Pittsburgh had to change and find other industry, and what Pittsburgh turned to was education, because we had a number of universities already in the town, and medical research, because there were a large number of hospitals in the town as well. Right. And that, go ahead. Gary, can you hear me? Yes. Okay, so I think we will cover these things later in our later part. So before Okay. that, we will move to some question answers, because our kids are very excited to know from your childhood, because whatever you are sharing us is something related to the place, and we have a special question for that. Okay. Yeah. So बच्चों, अभी गैरी हमें बता रहे थे कि वो पैदा हुए हैं ओहायो में, मिसिस ये पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने एक फोटो भी दिखाई थी जो उनके बैकग्राउंड में थी, जो कि एक ब्रिज था जो ओहायो रिवर है वहां पर, वहीं पे वो वहीं की वो फोटो थी, और वो वहीं पे बैठे हुए बता रहे थे बहुत ठंडी है, जैसे वो फोटो अभी देख रहे होगे तुम, वहां पे वैसी ठंडी है अभी। जो उन्होंने अभी फोटो लगा रखी है वो तो नकली है, लेकिन असली में वैसी एकदम बहुत ठंड हो रखी है वहां पे। वहाँ एक बहुत बड़ी रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी, वहां से वो जो वहीं की वो नदी पीछे दिख रही है, उसी नदी से निकलती है ओहायो, वहीं ओहायो है। और वहीं के बारे में बता रहे थे कि 40 साल पहले कैसा था वहां पर। स्टील के बहुत मिल हुआ करते थे, और जो कि बंद पड़ गए 40 साल बाद, और फिर नौकरी की बहुत दिक्कतें आ गई। ओके, सो बहुत कुछ मेरी ने थोड़ा से ही उसमें बता दिया। मैं अभी कुछ सवाल उनसे पूछूंगा और उनके जवाब वो देंगे, और उसके बाद फिर आप लोग अपने सवालों के साथ रेडी रहना। ओके, तो मेरा पहला सवाल है गेरी के साथ। सो गेरी, आई एम गोइंग टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट सिंस यू ऑलरेडी टोल्ड अस दैट you were born in Pennsylvania, but tell us, why do you like your town? Is there any something that you like most about your town, your hometown? Yes.
it's a very friendly city, and everybody, for the most part, is has a working attitude. So there are not many people who are very I don't know, fancy, thinking highly of themselves. They're very what we call down to earth in terms of uh, how how their behavior is. So Pittsburgh is sort of known as a very friendly city. And Okay. that's So one of the coolest things about here. ओके सो बच्चों मैंने सवाल पूछा था गैरी से कि आपके जगहों में जहाँ पे वो रहते रहे हैं, जैसे हम लोग पुणे में रहते हैं, मैं अभी लखनऊ में हूँ, तो जगह में आपको अपने जगह में क्या सबसे अच्छा पसंद है? तो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे तो नौकरियों की मारामारी हो रखी है, ठीक है। वही बता रहे थे कि जो बचपन से वहाँ पे पले बड़े हैं और वहाँ पे पहले बहुत नौकरियाँ अच्छी थी, अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया। बाकी लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं और ऐसा बताया। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछूंगा। मैं क्वेश्चन आपको पहले बताया था बच्चों कि अपने मैं उनसे अभी उनके बचपन के बारे में पूछने वाला हूँ। क्या उनको बचपन में स्कूल जाना पसंद था? जैसे भाई मुझे तो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खेलने में बहुत मजा आता है, जैसे अजीम को बहुत मजा आता है ना, खेलने में, कबड्डी में, क्रिकेट में आता है संदेश को, ऐसे मुझे भी बड़ा मजा आता था कबड्डी वगैरह खेलने में, रनिंग करने में। और तो अभी मैं गैरी से पूछूंगा कि उनको क्या पसंद है और वो टाइम पास करने के लिए क्या करते थे, और स्कूल में कुछ बढ़िया काम या कुछ बुरा काम किया क्या उनने? So Gary, I'm going to ask you your second question, that tell me about your childhood, that did you like going to school, and what you do for fun over there, the best and worst part, if you could tell us about your childhood. Sure. Yes, I did like going to school. I was the only child in the family, so going to school was something I looked forward to because I got to meet other kids. I grew up in an apartment building, and there were some kids in the apartment. It was a mix of ages of people. So you had very old people in the apartment building the whole way through little kids living with their families, and so that was fun because we could play there. But it was nice to have get to meet kids at school. So I liked that a lot. I was not very good at sports, so that was something that at times could be a problem. The school was real big on basketball, and I was short and pretty horrible at it. So that didn't work out real well. But the thing that I probably enjoyed the most after being with my friends in school was going to the library after school. My mother worked as a school nurse in the school district, but she would be at a different school each day. So I would go and walk to the library in the center of the town and get a book and read and wait for her until she was done. So I'd be there for a couple hours after school because we'd get out early and she'd still have work. And I loved that because when you read a book, you can go anywhere in your mind, right? It will take you to wherever. And I liked that a lot. That was cool. Okay. थैंक यू गैरी फॉर दैट क्वेश्चन। बच्चों गैरी बता रहे थे कि जब वो बचपन में थे तो उनको स्कूल जाना बड़ा पसंद था। क्योंकि स्कूल में वो क्यों उन्हें पसंद था? जब वो वहाँ पे जाते थे, जिस कॉलोनी में वो रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, वहाँ पे बच्चे बहुत कम थे। जैसे काला खड़क में तो बहुत सारे बच्चे हैं, खेलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वो जहाँ पे थे तो वहाँ पे बच्चे कम थे और बड़ी उम्र वाले ज्यादा लोग थे। तो स्कूल में उनको बच्चे मिलते थे, उनके साथ उनको बड़ा मजा आता था।
लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी बताई कि जब वो छोटे थे उनकी मम्मी स्कूल में नर्स थी, और जब वो सुबह काम के लिए जाती थी, जैसे अभी आप लोगों की मम्मी दूसरे घर काम करने को जाती हैं, पापा लोग भी जाते हैं, तो वैसे ही इनकी मम्मी भी जब काम करने को जाती थी तब ये लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पे किताबें पढ़ते थे, और किताबें इनको बहुत पसंद थी। इन्होंने बताया कि किताबें मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि किताबों के वजह से हम एक जगह पे बैठे हुए भी बहुत पूरी दुनिया घूम सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि किताबों की मदद से, किताबों के रास्ते हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। बस तुम्हें चाहिए एक अच्छी सी किताब और एक शांत वातावरण जहाँ पे तुम उसे अच्छे से पढ़ सको और पूरा एंजॉय कर सको। तो गैरी ने बताया हमें, सो थैंक यू गैरी फॉर दैट that thing that you told about the books, that how important the books are for to reach anywhere just sitting on your chair. Okay, so Yes. my next question to you Gary is अगला सवाल है बच्चों मेरा कि वहाँ पे हम लोग गैरी कैसे अपनी छुट्टियां कैसे मनाते हैं। जैसे हम लोग तो बड़ा धूम धड़ाका करते हैं, रंगोली बनाते हैं, वहाँ अभी मैं उनसे पूछने वाला हूँ कि अपनी छुट्टियां कैसे मनाते हैं, उनके परिवार में कुछ ऐसा है जो उस त्योहार के दिन करते हैं वो। So Gary, my third question is how do you celebrate holidays? Any specific holiday that you like to mention, and any special holiday tradition that you guys follow over there? Well, of course, this past year holidays have been very different because normally we would all get together. Most of the kids, at least 4 of my kids are at. They live outside of the Pittsburg area now, so they would come home, and we'd have a big meal with my dad, and sometimes we'd go over to my cousin's because my cousin was sort of my surrogate brother when I was little because he was an only child for a long time, and so we would get together, my parents and my uncles, my dad's brother would get together, and we'd have a big meal, and I loved that. That was always fun, and we would play up in his room and jump on his bed until his dad would come up and yell at us, and then usually do it again, and make his dad come back up and yell at us again. So that is what I enjoyed the past year with lockdown and everything. We didn't do much, but we did do a really cool Zoom meeting through the holidays, and so we would have a Zoom camera up in the dining room, where the food was, and everyone would do that, and then we'd talk throughout the day. My one daughter had a camera up in her kitchen too as they were preparing the food, so that actually was really cool. So okay, so Gary, thank you very much for telling us that how you used to spend, and I hope that things are fine over there and you can physically meet to all your relatives over there and celebrate those functions. तो बच्चों गरी बता रहे थे हमको कि वो अपने त्योहारों में, जैसे हम लोग भी करते हैं, एक दूसरे रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, वैसे ही कुछ कुछ वहाँ पे भी किया जाता है। और ये बता रहे थे कि इनके जो बच्चे हैं इनके घर आते हैं मिलने के लिए, इनको जो पिट्सबर्ग में अभी रहते हैं अपने दादाजी के साथ रहते हैं, और वहाँ से इनको मिलने आते हैं। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग साथ में ज़्यादातर हम लोग पापा मम्मी के साथ रहते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा अलग होता है। जब बच्चे होते हैं वो अपने या तो अलग शहर चले जाते हैं या अलग घर पे रहने लग जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, और फिर त्योहार के समय पे वो लोग मिलने के लिए आते हैं, उनके वहाँ पे कल्चर ऐसा है। तो ये भी बता रहे थे कि पिछले साल जब कोरोना आ गया उसकी वजह से तो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो जूम और ऑनलाइन ही सारी चीजें हुई, उसी में ये सारी अपने रिश्तेदारों से भी मिले, जैसे कि हम लोग भी पूरे 1 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। ये तो ये उतना मतलब थोड़ा तो इसमें कुछ फीलिंग आता ही है। अब जैसा हम फिजिकल मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कनेक्ट हमारा बना रहता है, वैसे ही वो भी बता रहे थे। और एक चीज और बताया उन्होंने कि जैसे तुम परिवार अपने दोस्तों के घर जाते हो तो पूरी चारपाई तोड़ देते हो उछल उछल के, वैसे ही वो बता रहे थे कि वो भी जब छोटे थे तो उन्होंने
चल के पूरा बेड वगैरह तोड़ ताड़ दिए थे उसके वजह से, जब तक उनके अंकल ने खूब डांट मारी थी उनको, तो ये अभी बता रहे थे। ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गैरी से कि उनका फेवरेट खाना कौन सा है। ठीक है, सो गैरी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट मील, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। Well, being Italian, at least from my dad's side, I like Italian food, um, pasta, pizza. Love pizza. every Friday night is pizza night. I made it. Yay! I made it through the week, so we get pizza. Um, I also like soups and some things, salads. Oh boy, I love a good salad. Um, so that's sort of my favorite things. Okay. Macaroni and cheese is very good too. We make a baked mac and cheese with in a big casserole dish and put it in the oven and bake it. So we make mac and cheese and then mix in more cheese and put it in the oven and get the top all crispy. And that's really good. That's a favorite. That's amazing, Gary. In fact, we also love, lots of our kids also love that pasta and pizza that you mentioned. People like it too much. And have you ever tried Indian food? Yes, I did. I had a friend back 15 years ago or so that I'm now working with again. His name is Dharmesh, and he lived in Cleveland, and he still lives in Cleveland. So that's only 2 hours away. And we would get together, and he has two daughters, and so the office that we worked from was in Cleveland. So I would drive up, spend a week or so at the office, working with the software developers, and we'd have a meal at his house, sometimes in the evenings, and that was fun. Okay, that's really nice, really, that you had Indian food, and I think you have liked it. Or and Yes. I asked, I will tell Amruta to send you some more dishes because they are very delicious, and they certainly have some different taste than what you are currently having, that Italian. Okay, so बच्चों Yeah, मैंने I would love to send. yeah, बच्चों मैंने अभी उनसे पूछा था कि उनको खाने में क्या पसंद है, जैसे अपने को तो वड़ा पाव और बटर और पनीर, बिरयानी, ये सारी चीजें पसंद है। उनको पसंद है इटालियन फूड। इटालियन फूड में क्या क्या आता है, जैसे कि आता है पिज्जा। पिज्जा खाया हुआ किसी ने? बड़ा मजेदार होता है। पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, ये वाली चीजें होती हैं। हम एक बार शायद हम लोग लेके आए थे, पार्टी की थी हमने, तब लाए थे, या फिर हम लेके गए थे सबको मैकडोनल्ड्स में, वहां पे हमने खाया था, अगर किसी को याद हो तो। हाँ, बच्चे हैं अगर वैसे तो। ओके, और उन्होंने इंडियन फूड भी खाया, बता रहे कि बड़ा मजेदार होता है। धर्मेश करके उनका कोई तो भी दोस्त था, उन्होंने दोनों ने पार्टी की थी मस्त, तो बता रहे थे वही। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल मैं पूछने वाला हूँ उनसे कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम आया कि जो उनको बहुत मुश्किल वाला लगा। क्योंकि बच्चों देखो, हमारी लाइफ में इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि इनके लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया कि जब इनको मुसीबत ऐसे लगी, या ऐसा टाइम जो बहुत खुशी वाला था, और वो कैसे, जो मुश्किल वाला टाइम था उससे कैसे बाहर निकले। So, Gary, your next question is, what was your happiest time and the hardest time also in your life so far, and how did you get through it? I hope this is a Okay. bit heavy question. So for the happiest time, I have to say, um, the birth of each child. I would be remiss, right, if I did not say that. But the overall happiest time was when I married my wife, Kara. Um, I was so
at ease and peaceful on the wedding day. I surprised myself by that. I was early. I'm usually not early for much, so I was early there, and it was really cool. I just was so thrilled and proud, and it was a good time. So that was probably the best time. And the worst time was well, 2 years ago now, when my mother passed away. She had Alzheimer's, so she would start to forget things more and more and more, and that was difficult. We had to find somebody to help out with her and my dad, and we got lucky and found somebody who could help with that. But that was difficult to go through, because it was you saw her just going away, which was sad. So that was a tough time, but we made sure my dad got through it, and that things were as happy for her as they could be. And so that was the saddest time. Thank you, Gary, for knowing us that, and I'm sorry for your loss. Thank you. बच्चों में गैरी ने बताया हमें कि उनका सबसे खुशी वाला वक्त था जब उनके जब बच्चे हुए थे, और उससे भी ज्यादा खुशी का टाइम था जब उनकी शादी हुई थी। बता रहे थे कि शादी के बाद बहुत खुश थे वो, और मैंने उनसे पूछा था कि सबसे दुख वाला वक्त कौन सा था उनकी लाइफ में, तो उन्होंने बताया कि जब अभी 2 साल पहले उनकी मम्मी की डेथ हुई, उनकी मम्मी का स्वर्गवास हुआ, तब वो समय उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो बच्चों मैं ये चीज आपको भी बताना चाहूंगा कि हमारे जिंदगी में जितने लोग होते हैं, हमें उनकी अहमियत करना आना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो लोग हमको छोड़ के जाएंगे। तो वो अगर हमारे पास हैं तो हमें उनकी कीमत करनी चाहिए। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे टीचर, ये क्योंकि अभी तुमने तो पिछला साल देख ही लिया कितना मुश्किल था, और ये चीजें परिवार पे भी आ जाती हैं। कभी-कभी परिवार की में भी कभी-कभी मुसीबतें आ जाती हैं। तो हमें इस समय ये जो भी हम वक्त गुजार रहे होते हैं उनके साथ, अपने परिवार, दोस्तों और हमारे रिश्तेदारों के साथ, वो बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो जितना वक्त है मस्त मजे से जियो और एंजॉय करके रहो। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, और उससे पहले मैं बताने देना चाहता हूँ कि 5 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हुई तो दोबारा से सेम लिंक को ज्वाइन कर लेना। Gary, after 5 minutes, the link will expire, and you have to join the same link Okay. for another 30-minute session. Okay, so मैं next question पूछूंगा। Next question है हमारा कि ठीक है, मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल मैंने सोचा था कि गैरी से पूछूंगा कि भाई उनके लाइफ में कुछ फनी हुआ है क्या। जैसे आप लोग मुझे अपने स्कूल में बताते हो कि सर यहाँ पे ये वाला एक बहुत फनी चीज हुई, बहुत मजेदार चीज हुई, वैसे ही हम गैरी से जानते हैं कि उनके लाइफ में कोई ऐसी एक फनी इंसिडेंट हुआ है क्या। So Gary, I'm going to ask you my next question. Can you think of any funny stories from your life or from your youth, and if you would like to share with us? Okay. Let's see. Well, this is from when I started working. There was one guy in the office that was very much into wrestling. First of all, so he was into the precursors of WWE, and he was a big guy. He worked out at the gym, very strong. And when something would go wrong when he was programming, he would bang on the desk and get very mad. And when he banged on the desk enough, it would cause his computer to reboot, which would make him all the madder and would make us laugh. Of course, he didn't like it when we laughed, and he would get mad.
but it was very funny. So yes, when he was coding and he hit a bug or something he couldn't figure out, he responded very physically to that and working through it, and that was always funny. And wherever you were in the office, you could hear him when he banged on the desk, and then he'd yell because the computer rebooted. That was really funny, Gary. Okay, बच्चों, गैरी बता रहे थे कि उनके ऑफिस में एक बंदा है जो WWE का बड़ा फैन था और बहुत बॉडी वॉडी बना रखी थी उनने। और ये गैरी एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसमें कंप्यूटर में कोडिंग करनी होती है। तो जब भी उस आदमी का ऐसे कंप्यूटर नहीं चलता था तो उसे बहुत गुस्से से ऐसे टेबल पे मारता था, और उससे टेबल पे जम से मारने के से पूरा टेबल हिल जाता और कंप्यूटर बंद पड़ जाता। तो ये देख के सारे गैरी और इसके दोस्त सब हंसने लग जाते थे और वो फिर सब पे चिल्लाता था। तो ये बहुत बार होता था, इनको पता लग जाता था, जैसे टेबल पे मारता है सब खड़े होकर इसको देखने लग जाते थे कि लगता है फिर इसने कंप्यूटर बंद कर दिया। तो ये इंसिडेंट भी बताया। Okay, so Gary, we are going to move to next question, and this is related to your passion. बच्चों, मैं अभी गैरी से पूछने वाला हूँ कि उनको passion क्या है, मतलब उन्हें कौन सी पसंद है, कोई फेवरेट हॉबी जैसे कि अगर हो, और वो हॉबी उन्होंने कैसे स्टार्ट की। जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग गए थे एक स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, वहाँ पे अजीम को बड़ा रनिंग पसंद आया था और उसके बाद उसने रनिंग काफी स्टार्ट कर दी थी। वैसे ही कार्तिक को ड्राइंग एक जगह बहुत पसंद आ गई थी और उसने ड्राइंग को ही अभी काफी अच्छा करने लग गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदगी में अगर ड्राइंग की फील्ड में भी कुछ करना चाहेगा पढ़ाई के साथ साथ, तो वो जरूर कुछ बढ़िया बन सकता है। तो वैसे हम गैरी से ही पूछेंगे कि भाई उसको, उनके भी हैं क्या कुछ ऐसे फेवरेट हॉबी या फिर कुछ पैशन जिसको उन्होंने किया और उसमें वो अच्छा कर पाए। So Gary, your question is, what is your passion or a favorite hobby, and how it gets started? Would you like to share us? Sure. So when I was young, one of the things that my mother got me involved in was volunteering at the Red Cross, which I think would be Red Crescent there, Red Crescent Society, a volunteer organization dealing with taking care of people in either a local disaster like a fire in their building, or teaching first aid and medical classes and swimming classes. And so there was a really cool group that they had that was a youth-based first aid team. So you could start when you were 15 or 16, and they would teach you first aid class, and they teach you CPR, and then all summer you worked with a nurse practitioner and some other medical adults, and you would go out and do first aid for public events. So if there was a street fair at the local church, or there were golf tournaments in the area, or there were other events that happened, or for disasters. So like when there was a train derailment in the city of Pittsburg, and to feel comfortable interacting with other people. And this was a very good way for me to learn to feel more comfortable interacting with people and talking to people, because they came to us when they needed help, right? They got a bee sting, or they fell and or cut themselves, and I felt comfortable with that, and so that helped a lot in making me feel much more comfortable interacting with people. Even when I was in my teen years, it was difficult. So that was
that was very helpful from that standpoint, and it was great to be able to help people. And the team was run by youth, which was really cool. It was a very special special thing at that time. Okay, so thank you, Gary, because this thing is very important to work for others. And you started it at the age of 15. It is, I mean, that's amazing because most of us don't even know what to do, what to follow. And you started at the age of 15. तो बच्चों, गैरी ने वही बताया कि 15 साल की उम्र में उनको पता लग गया था कि उनको आगे चल के क्या करना है। उसमें से सबसे मेन था जो उन्होंने बताया कि कैसे वो रेड क्रॉस सोसाइटी उन्होंने ज्वाइन किया और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। तो बच्चों, मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग भी अपने, अभी ये सही मौका है, आप लोग सब अपने को आगे क्या करना है वो अभी से सोचना, उसके बारे में चालू करो और उसको फॉलो भी करना स्टार्ट कर दो। कि हो सकता है कि कुछ एनजीओ में जाके काम करना हो, किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट में कर सकता है, किसी को साइंस पसंद है तो वो साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है। जो भी चीज़ है, बस अभी थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचो, ठीक है? बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ में, खेलना कूदना मस्ती मारना सब चलता रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी से उसको सोचना स्टार्ट कर दो कि तुम लोग को आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, किसी की हेल्प करनी है और करनी है तो कैसे करनी है, या फिर खुद के लिए मम्मी पापा को प्राउड करना है तो कैसे करना है, क्या करूं मैं ऐसे कि कुछ बदलाव आए सोसाइटी में। जो भी है चीजें वो अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना चालू करना है, ठीक है? क्योंकि भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा है सिर्फ खाने और पेट भरने के लिए थोड़ी भेजा है, कुछ ना कुछ सोच के बाद भेजा होगा, है ना? तो वो चीज सोचना है हमें अभी से। ओके, सो Giri, I think I have to skip one or two questions because time is running and kids are waiting to ask the questions. Okay. Okay, so I'm going to ask last two questions, last one question. Okay. Okay. बच्चों, मैं आखिरी एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद आप लोग रेडी रहना अपने सवालों के साथ। So Gary, tell us that who was the most influential person in your life, and if any value that you would like to share of that person or your own value. बच्चों, मैंने गैरी से पूछा कि वो हमको उनके जिंदगी में कौन ऐसा इंसान रहा है जिन्होंने उनकी जिंदगी को पूरा बदल के रख दिया, उनकी जिंदगी पे किसी का बहुत प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा कोई इंसान। ठीक है, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है, किसी मम्मी होती है, किसी का कुछ होता है, तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा। अब देखते हैं उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ। यस गैरी, ओवर टू यू। The most influential person in my life was definitely my mother. My dad worked a lot. He worked long hours, and so my mother was the person that I interacted with the most, and she always worked hard to take me to places, take me to the museum, or take me to the library, or take me out somewhere with my cousin, so that I had a fun and busy childhood. And so that also made, when she didn't recognize what was going on anymore, harder. But through that process, my dad and I got much closer, and so that was it was an interesting way that she brought my dad and myself closer together as she slipped away. Okay, yes. Gary, in past year, most of us and our kids also have to spend a lot of time with their parents, because generally their parents are daily wage earner and they don't have that much time to spend with their child. But due to COVID, they have spent a lot of time, and their relationship has improved, that I've seen. So this is the thing that is common between you and us and our kids, that will certainly help in their life. बच्चों, गैरी बता रहे थे कि उनके जिंदगी में सबसे प्रभावित करने वाले व्यक्ति उनकी मम्मी रही हैं। उनकी मम्मी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है।
वही ऐसी थी कि जो उनको म्यूजियम में लेके जाती थी, लाइब्रेरी में लेके गई, और जहाँ पे भी उनको जाना रहता था गैरी को, वहाँ पे उनकी मम्मी उसको लेके जाती थी, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। और जब उनकी मम्मी का देहांत हुआ तब उनके पापा से इनकी करीबियाँ बढ़ी। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वहाँ पे लोग थोड़े से अलग रहते हैं, तो जब इनकी मम्मी का देहांत हुआ तब उनके पापा से इनकी थोड़ी करीबी बढ़ी। जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे पिछले साल आप सबके घर पे पापा मम्मी रहने लगे थे, जो कि बहुत कम पहले होता था। पहले वो 10-12 घंटे बाहर रहते थे, फिर आके बस सो जाते थे। लेकिन कोरोना के टाइम पे सब अब रहने लगे, तो बहुत बच्चों ने मुझे बताया भी था कि अब पापा के साथ बातचीत करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। मम्मी के साथ टाइम बिताने लग गए हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है कि अपने घर पे भी अपने मम्मी पापा हैं। Okay, so now kids will ask you a lot of questions. So Gary, are you ready? Yes, I'm set. Okay. बच्चों, कौन पहला सवाल पूछना चाहेगा? अजीम? Yes. सर मी फर्स्ट सर भागवत। हाँ, अभी मैं बोलूंगा तब बताना। नंदकिशोर, अभी मैं पूछूं। सर मैं बताऊंगा भागवत। हाँ भागवत, 1 मिनट रुको, अभी अब अजीम पूछ ले फिर बताना। हाँ जी। सर तो आपको कब जो है आप लोगों की मदद कर आपको फील करता है? अजीम यार, तुम्हारी आवाज पूरी कट रही है। Your voice is breaking. कुछ समझ में नहीं आया ठीक से। सर आपको जब आप 15 साल की उम्र में जब एनजीओ में भर्ती हुए, तब आप जब लोगों की मदद कर रहे थे तो आपको फील कैसा है? अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गया। सो Gary ji, Azim is asking that when you joined the Red Cross Society, how did you feel that moment when you joined? What was the feeling? Initially, it was scary because it was a lot of people and it was a lot to learn. But after it was on the weekend, so every Saturday we would go down to the Red Cross building and spend 4 to 5 hours there, and pretty quick you got to know the people and felt comfortable with them. And then it got to be fun because you were learning together new things that sometimes were difficult to understand, and so it was fun to get through it together. And as you got further along, you felt good about yourself because you were learning and able to do these new skills, and that was really cool. सर आप म्यूट हो। Yeah, I was telling that you started with fear and you ended very confidently. Yes. I can see. ओके, सो बच्चों, गैरी बता रहे थे, अजीम आपका सवाल में गैरी बता रहे थे कि जब वो चालू में उन्होंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया था तब उनको बहुत डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होते थे, और जैसा बताया मैंने कि मेडिकल के क्षेत्र में होता है ये, लोगों को मदद कराना, उसमें खून खराबा भी बहुत दिखता था, खून दिखता था लोगों का। तब पहले तो बहुत डर लगता था उनको, लेकिन जैसे जैसे वीकेंड में वो होती थी, वो जाते थे, वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब भी ऐसे काम में देखो, कोई भी काम करने लगोगे, चालू में डर लगता है, पर लगे रहो तो बात बन जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भागवत, आप पूछ रहे थे। गेरी सर कहाँ से बोल रहे हैं अभी? इंडिया या फिर अमेरिका? नहीं, अमेरिका से बोल रहे हैं। वीडियो ऑन करो तुम अपना। हाँ बोलो भागवत। सर गेरी सर अभी अमेरिका में कहाँ पे रहते हैं? इन विच स्टेट, इन विच कंट्री गेरी सर लिव्स? अमेरिका में पेंसिल्वेनिया नाम से एक जगह है, वहां पे रहते हैं। सर जैसे अपना महाराष्ट्र है ना, वहां पे जाना पेंसिल्वेनिया है। सर, हाँ बोलो, अंगूठा हटाओ तो कैमरे से। सर मैं भी बड़ा होने के बाद अमेरिका में जाना चाहता हूँ, इसलिए पूछा था।
अच्छा, और कुछ ऐसा पूछना है तो फटाक से पूछ लो। अभी देखो वो रास्ता पूछना है कैसे कैसे जाना है तो वो भी पूछ लो। Okay, sir. Okay, so maybe he was asking that currently where are you? Are you in India or in America? And he also want to come to America, and he's a great fan of USA and the people over there. He really love that. Excellent. Okay. Next question, बच्चों. सर मैं हाँ संदेश. I am. एक मिनट नंदकिशोर, अभी रुक जाओ. संदेश पूछ रहे हैं, संदेश भैया पूछ रहे हैं. सर आपके लाइफ में आपको इंडिया मतलब इंडिया से कोई दोस्त मिला है क्या? उसकी कौन सी चीज जो इंडिया से रिलेटेड आपको अच्छी लगी? Okay. So Gary, Sandesh want to know that have you ever met any Indian friend or have you made any Indian friend, and what is the good thing about that person that you liked? Okay, so I've met a number of Indian friends, but definitely my best friend that's Indian is Dharmesh, and I like that he is very smart um, with computers, and very a very good teacher. So he's smart, but he doesn't make you feel dumb. and we have worked through many problems together, and that's been a fun time. I enjoy working through a problem and figuring it out, and it's always fun to work with somebody else also, because then you have two different minds and two different perspectives on the problem. And I've always found that your code or your problem solving is better when you have another person looking at it as well, someone you can talk to, and someone that has ideas of their own. Exactly, Gary. And I hope that you still have that friend with you, and you still have that friendship. Okay. Yes, he's actually the owner of the new company that I'm with. So it's very cool. That's interesting to know. Amazing. Okay, so संदेश, गैरी बता रहे थे कि उनके हरमेश करके कोई फ्रेंड है जो इंडियन है, बहुत उनको पसंद है, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ, और वो उनको इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत स्मार्ट है. वो स्मार्ट से मतलब है कि बहुत अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं. और टीचर वो जो उनके साथ उन्होंने काम किया है, उस काम में उनके जो व्यूज रहे हैं, काम करने का तरीका रहा है, वो उनको बहुत पसंद आया था. तो इसके लिए उनको वो दोस्त बहुत पसंद है, और आज भी उनकी दोस्ती है उनसे. और अभी बता रहे थे आखिरी में, उन्होंने बताया कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी का ओनर है वो, जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो उसका इंजन है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नंद किशोर, तुमने बोल रहा था. सर है ना, आप है ना गैरी सर से पूछो कि आपको कैसा फील हुआ जब है ना आपकी मॉम डेड हो गई. अच्छा, ठीक है. ओके नंद किशोर. सो गैरी, one of our kids, Nand Kishore, want to know that how did you feel when your mother left you? It was not super surprising, right? Because she had been sick for a while, but the actual time that it happened, she was in the hospital for they were going to do surgery, and the next day, and she had a blood clot go to her heart. So it was
it was a surprise at when it happened, I guess, not that it happened. But the hospital was 25 minutes away from my home, but she was she waited for us to get there and didn't pass until after we had gotten to the hospital, and she was unconscious, but I don't know, she could hear us, that I had gotten there and that my wife had gotten there, and then she passed, and I thought that was really cool. I'm sure she So must be proud wherever she is. She must be proud yes, of. it was sad, but happy, you know, that I got to see her before she passed. थैंक यू गैरी। नंदकिशोर, गैरी बता रहे थे कि बहुत ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी मम्मी भी बहुत हिम्मत वाली थी। वो तब तक रुकी जब तक उनका पूरा परिवार आके उनसे मिला नहीं, तब तक उनके प्राण नहीं निकले थे। तो बच्चों, अपनी मम्मी पापा सब लोग का मस्त ख्याल रखना, ताकि तुमको ये मुश्किल समय ना आए तुम्हारी जिंदगी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? सर मैं यस अमोल, क्विक फास्ट। सर क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में एक तो कौन सी बुक फेमस है और वो आपने पढ़ी है क्या? ओके, अमोल अपनी जो भी सवाल पूछे अपना वीडियो पक्का ऑन करे, ताकि गैरी को भी दिखाई दे कि सवाल पूछने वाला आदमी कौन है, सवाल पूछने वाला बच्चा कौन है ना? Okay, so Gary, there is one very interesting question that which is the book that you have read, your most loved book, which you would like to suggest him to read, because he is one of our kids who likes to read a lot. Okay, so when I would go to the library, I became a student of or World War II. So I read a lot of books on World War II when I was young, and then when I got older, I liked military fiction, and Tom Clancy came out with The Hunt for Red October, which is an excellent book and an excellent movie, and so that's probably my favorite book of all time. Thank you, Gary. It mixed my history and military information with a good story. Is it the same book on which the Saving Private Ryan is made? No, that's a different book. Okay. But the that's also a good series. Okay. Yeah. सो अमोल, गैरी बता रहे थे कि उनकी जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बहुत उनकी रुचि हुई। तो मैंने थोड़ा सा बताया है, आगे और बताऊंगा। और वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिसमें से हिटलर भी एक नाम मैंने तुमको बताया था, जो जिसके वजह से हुआ था ये। उन्होंने गैरी ने एक बुक का नाम बताया, तुम थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो उस बुक को पढ़ना। अभी वो बुक थोड़ी समझ में नहीं आएगी तुमको। उसका नाम है हंट फॉर रेड अक्टूबर। ठीक है, ये जब तुमको पूरा इंग्लिश में अच्छा कमांड आ जाएगा तुम्हारा, तब उस बुक को पढ़ना अमोल। ठीक है, मैं तुमको कहीं से ला के दूंगा, चलेगा। और किसी का क्वेश्चन? सर मैं बोलूं? हाँ जय। सर गेरी सर को है ना, ऐसा लगता था कि मेरी ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसे सिक्स पैक होने चाहिए थे। Okay. So Gary, Ajay want to know that have you ever wondered that you should have a wonderful body or six packs and a lot of cuts in your body? The only time I had that in my life
was when I was in university, and I swam. I took swimming classes, and one of the because I had liked to swim when I was little, and the swimming class that I took was swimming as a conditioning. So the instructor would pair you up with somebody else that was about the same abilities as you, and you would swim laps in the pool, back and forth. And this was a giant pool. It was so big that they would teach rowboat classes in the pool at times. So they also had swim meets there, and the swim meets, when other teams would come in, they'd ice the pool. They'd actually throw ice into the pool to cool it down, so that the swimmers could get rid of their body heat as they're swimming. And one of the classes was right before a swim meet, and you would actually push ice cubes out of the out of the way as you swam, and it was so cold. So you just swam as hard and as fast as you could to try and keep warm and get through your laps. And that got me in the best shape that I was ever in. That's amazing. That's wonderful, Gary. And I would also like to tell you that I'm also a great fan of swimming, and I've taught 7, 8 kids how to swim. And we used to Cool. go in summer. We used to go to a nearby swimming pool, and that was not as big as you're mentioning, but it was considerable one, and we enjoyed a lot over there. Very cool. I love to swim. ओके It's a lot of fun. या सो बच्चों गैरी बता रहे थे कि जब वो यूनिवर्सिटी में थे, मतलब कॉलेज में जब थे, तब उनको बहुत ऐसा लगा कि उनको बॉडी बनानी चाहिए। अजय, तुम पूछ रहे थे ना, और वो कब लगा? जब वो स्विमिंग जाते थे। तो देखो, तुमको भी स्विमिंग पसंद है, और वो भी जब स्विमिंग जाते थे तो वहां पे कैसा होता है कि वहां पे जोड़े बनाए थे। जैसे हमने बड़ी सिस्टम देखा था, हम 2-2 करके हम जोड़े बनाए थे, और वैसे ही वहां पे रहता है कि जोड़े बना देते थे, और उसमें जो उनके साथ बंदा था उसकी मस्त बॉडी थी, तो इनको भी लगा कि ये भी उसके साथ ही उसके जैसी ही बॉडी बनाएंगे, और स्विमिंग करके बहुत मस्त इनकी भी बॉडी आ गई थी। तब इनको लगता था कॉलेज के टाइम पे कि अच्छी बॉडी होनी चाहिए। लेकिन तुम लोग अभी से थोड़ा अच्छा बॉडी का तो पता नहीं, लेकिन तंदुरुस्त रहना, रनिंग वगैरह, रनिंग, क्रिकेट, स्विमिंग, ये जितनी चीजें एक्सरसाइजेस हैं, ये बराबर करते रहो, एकदम मस्त फिट रहो। ओके, और किसी का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है? नो सर। मैं कैन आई आस्क, मैं पूछ लेती हूँ। यस यस यस। I just had one question in my mind, Gary, while the meeting was going on. Like everybody has some formula to live a happy life. Like in my office, one girl has written on her desk that let it go, and she follows that so that she don't have anything in her mind and she remains happy. So like everybody has some formula to be happy, and I have seen you as one of the happy person in my life. So what is the formula you have to live a happy life, or say satisfied life, kind of? So there's a couple of things. You are हाँ, अमृता जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा बच्चों को बता दो क्या पूछा आपने, ताकि बना रहे और हाँ ओके। मेंटेन रहे, बच्चे भी थोड़ा समझें। तो ओके, तो बच्चों, मैंने ये सवाल पूछा है कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए। कि अभी जैसे है ना, हर किसी का कोई तो एक चीज फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोग फॉलो करते हैं कि मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं ज्यादा, मतलब कुछ भी होता है मैं उसको अपना काम करूंगा और बाकी सब छोड़ दूंगा। ऐसे कुछ लोग करता है कि वो उनके दिमाग में कोई ख्याल ज्यादा ना रहे, पके ना ख्याल, और वो खुश रहे। वैसे हर किसी का कोई तो एक चीज होता है जिसको वो माइंड में रखते हैं कि मैं ऐसे ये चीज फॉलो करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। तो वैसे मैंने गैरी को पूछा कि उनका क्या ऐसे है जो उनको खुश रखे ऐसे। Okay, so Okay. Gary, you can answer. Sure. So the first thing is remember that everyone looks prettier or more handsome when they smile. So smile a lot, right? It puts other people at ease, and makes
people realize that you were friendly. Always treat other people like you would want them to treat you. So that's an important mindset to have. And a side part of that is that realize that you can learn something from everyone that you meet, no matter what they are, what they do. There's always something that you can learn from them. And also, whatever you work on or whatever you do, always do your best, even if you don't think someone will notice, because your work is a reflection of you and who you are inside. So if you always do your best, people will notice that. And the last thing is much like your friend, right? Learn to not worry about things that you can't control or change. Just let them go, right? If you can't change it, don't worry about it. You can focus only on the things that you know you can change, and focus your energies there. Don't try and work too hard or worrying about stuff that you can't do anything about. Right. Yeah, Gary, thank you for so that, much. for that amazing 5 points. बच्चों, गैरी ने कुछ बहुत बेहतरीन 5 चीजें बताई, मैं बताना चाहूंगा उसको। अमृता मैम ने पूछा था कि जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, कि जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो गैरी ने पहला पॉइंट बताया कि हंसो, मतलब स्माइल दो। स्माइल हमारे चेहरे पे जब भी आती है तो हमको, आगे वाले को लगता है कि वो एक फ्रेंडली आदमी है। अभी उसके पास उसको मिलने से, ये सब बात करने पे और उसके नजदीक जाने पे हमको डर नहीं लगता है। तो एक तो हो गया स्माइल। फिर दूसरा बोला कि दूसरों को वैसे ट्रीट करो जैसे तुम भी चाहते हो कि वो तुमको ट्रीट करे। दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसा तुम खुद के साथ बर्ताव होना चाहते हो। सर आप म्यूट हो। हाँ, और तीसरी बात उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान हो, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, कोई आपसे बड़ा हो उम्र में, कुछ काम में बहुत छोटा काम करने वाला इंसान हो, कोई भी, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, एवरीवन हैज समथिंग टू टीच यू। सबके पास कुछ ना कुछ होता है कि वो तुमको सिखा सकते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि जब भी कोई भी काम करो, कोई भी, चाहे भले ही झाड़ू लगा रहे हो या मम्मी ने खाना बनाने का बोला है या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें अपना बेस्ट दो। ठीक है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, कोई रनिंग करने जा रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ भी काम में तुम अपना 100% दोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो पूरे चांसेस होंगे वो काम अच्छे से पूरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुमने उसे पूरी जान लगाई है तो तुम उसमें जीत भी जाओगे, उसमें पूरे बेस्ट और फर्स्ट भी आ जाओगे। लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में कि जिन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो उन चीजों को जाने देना है, उसकी चिंता नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे भी कोरोना, देखो कोरोना आ गया, उसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम जब बाहर जाके ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे को नहीं होगा, ऐसे नहीं। अपने को वो चीज, वो टाइम निकलने देना पड़ता है, वो टाइम निकलता है और सब चीजें फिर ठीक हो जाती हैं। तो वैसे ही लाइफ में कभी कभी ऐसे आएंगे, हो सकता है तुम्हें किसी विषय में कम नंबर आए, लेकिन फिर उस चीज को जाने दो, बस ये सोचो कि अब आगे अच्छा करना है, वो चीज से एक सीख मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट बहुत बेहतरीन बताए गैरी ने। और किसी का सवाल है कोई तो जल्दी से पूछ लो, कम टाइम बचा है आपको। सर मेरा यस अमोल, फास्ट। सर मेरा हाँ पूछ लो। हेलो, हाँ मेरा हाँ। यह सवाल है कि जब गैरी सर छोटे थे तब उन्हें भी ऐसा, मतलब किसी को देखते हुए जिसने अच्छा काम किया, जिससे पुलिस हुआ, उसने अच्छा काम किया तो उनको भी लगता था कि मैं भी पुलिस बनूंगा, या आर्मी मैन को देखा तो उन्हें भी लगता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, टीचर ने अच्छा काम किया तो टीचर बनूंगा, इस सब उनका भी माइंड चेंज होता। Okay, so again a very interesting question, Gary, for you, that Amol asked you that
he's very confused in his life that whenever he see a policeman, he wants to become a policeman. When he sees a military man, he wants to go for military. So have you ever had this kind of confusion, and how did you overcome that? Yes, I did. When I went into university, I selected engineering because I did math okay and was interested in it. And I went into electrical engineering to because I thought that that was what I wanted to do. And it took me a while to figure out that high level math was not for me, and that I liked the computer programming side, not the computer building side of things. And it's difficult sometimes to figure out what you want to do, but it's good to get to try or investigate a number of different things, and then you can follow your passion. You can see what interests you, and that is the direction you should pursue. Would be my suggestion. ओके, थैंक यू गैरी। बच्चों, गैरी बता रहे थे अमोल, जैसा तुमने पूछा कि कंफ्यूजन उनको भी थी बचपन में, वो भी सोचते थे ऐसे कि क्या करना है, लेकिन जब उन्होंने इंजीनियरिंग चॉइस किया और इंजीनियरिंग में ही काम करने लगे तो धीरे धीरे वो चीज़ उनको पसंद आने लगी अच्छे से, फिर कंप्यूटर इंजीनियर बने और अब उसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ऐसी कंफ्यूजन आएंगी, उसको कैसे वो ओवरकम करना है, उसको कैसे सही करना है कि जब भी वो कंफ्यूजन आती है तो उसको करके देखो। जब उसे तुम करोगे तब तुम्हें पता लग जाएगा वो तुम्हें सच में पसंद है कि नहीं है। अगर पसंद नहीं होगी तो फिर उसको छोड़ो, तो कुछ दूसरी चीज पसंद है उसको ट्राई करो। उसको ट्राई करोगे थोड़ा टाइम में तुम्हें पता लग जाएगी वो तुम्हें पसंद है कि वो नहीं होगा, फिर उसको भी छोड़ो। जहाँ पे तुमको ऐसा पता लग जा रहा है कि भाई ये चीज अच्छी है और इसमें बहुत अच्छे से कर भी पा रहा हूँ, बस उसमें लग जाओ। उसमें तुमको थोड़ा टाइम लग सकता है उसको पाने में, लेकिन बस लगे रहो, वो मिल जाएगी तुमको। वो पैशन को, उस चीज को तुम फॉलो करो तो हो जाएगा। ओके, सो फटाक से किसी का लास्ट क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। एनीवन? नो सर। ओके, ठीक है, ओके फाइन। सर मैं पूछूं? हाँ अमोल, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हाँ तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि गैरी सर की इंडिया के बारे में क्या राय है? अमोल थोड़ा रिपीट कर दोगे क्या? सर माय क्वेश्चन इज गैरी सर की इंडिया के बारे में क्या राय है? ओके, सो very abstract question for you, Gary, that what is your opinion about India? India seems to be a very neat place that has a lot of history that as a fan of history, I would like to visit someday, and see the sites and meet people that I've talked to and worked with, but never been able to meet in person. So it's neat to see another democratic country, working through all the big challenges, but being able to make some really serious inroads in technology and be able to do stuff around the world. I think the Indian people are some of the most traveled people that I know of, going to different countries to work and to visit, and I think that's really cool. Yes, Gary, and we would love to have you as our guest. You can visit anyone. You can visit anyone's house over here. If you plan, yeah, if you plan to come, you just have to tell us that you are coming over here. Remangas are, yeah. And our doors are always open. Yeah. And excellent. we'll made a lot of Indian dishes for you. Yeah.
तो बच्चों, अमोल, गैरी बता रहे थे कि उनको इंडिया बहुत पसंद है क्योंकि इंडिया में बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बहुत हैं। भारत का जो इतिहास रहा है बहुत बहुत पुराना इतिहासों में से एक है। और भारत में भी लोकतंत्र पे सब विश्वास रखते हैं। हमारे देश में भी लोकतंत्र है, जैसे डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी, अमेरिका में भी। अमेरिका सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है और हमारी भी उनमें से ही एक है। उनकी सबसे पुरानी मानी जाती है, हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। और ये भी बता रहे थे कि भारत के लोग उन कम देशों में से हैं जो पूरी दुनिया में सैर करते हैं, पूरी दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं। तो ये चीजें उनको बहुत पसंद है और वो कभी मौका मिलेगा तो जरूर भारत आना चाहेंगे। तो आप लोग उनको घर पे अपने इनवाइट करोगे कि नहीं? यस करेंगे सर। Yes, I am invite. Cool, thank you. Okay. So Gary, with this, I would like to wind up our chit chat, and I think you'll like what. हाँ, अमोल कुछ बोलना चाहते हो? मेरे पास और एक क्वेश्चन है। नहीं नहीं, अब अभी देखो टाइम हो गया एकदम, है ना? वहाँ पे काफी गैरी को भी काफी काम रहेंगे, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है? Okay. So Gary, thank you very much for this wonderful session, and thank you Amruta for asking Gary to meet us. And now we have one more friend with us from America, and we would, I think someday our kids will reach there, and I hope we'll meet Gary over there. Our friend is there. It was great to meet you all. Thank you. Thank Yeah, you and for Gary, sharing yeah, your questions. yeah, thanks a lot Yes. for your time. Sure. Thank you everyone. Bye from Pittsburgh. Bye from Bye. America. Bye. बाय सर। Let us know in the comment box what do you think about Gary and America. And if you like what you just saw, then share it with your friends and hit the bell icon after subscribing our channel Tell Us Amigo. So amigos, we'll meet soon. Till then, Jai Hind.